Good afternoon, everyone. Welcome to today's Odisha specific weekly current affairs discussion class. In today's class, आमे 10th November ରୁ ନେଇକି 16th November ଯାଏଁ ओडिशा स्पेसिफिक जहाँ भी OPSC ପାଇଁ କି relevant ସେଇ ସବୁ current affairs ଆମେ discuss କରିବା, cover କରିବା. Discussion आगରୁ ମୁଁ previous class रे जहाँ भी MCQ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି କି next class ରେ ତାର answer ଆଉ brief explanation provide ହବ. For revision purposes ସେଗୁଡିକ ଆମେ first discuss କରିବା. I hope जोटा मु previous class रे କହିଥିଲି କି ସମସ୍ତେ previous class को revise କରିକି ଆସିଥିବେ କାହିଁକି ନା previous class ର MCQs first ମୁଁ discuss କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି current affairs ଆମେ discuss କରିବା. Session ଟି start କରିବା ପୂର୍ବରୁ just let me be clear कि मोर audio video रो audio आउ जहाँ भी मु एठी annotate करूची लेखुची स्क्रीन रे सेटा प्रॉपर शो होउची कि नाइ जस्ट विदिन अ मिनिट केही भी लाइव चैट रू थरे कंफर्म कर दियंतु कि ऑडियो आउ वीडियो दीटा जाक क्लियर अछि. ठीक अछि समस्ते कहउचंती क्लियर अछि बोली. OPSC मेंस 2024 ପାଇଁ कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हे जाईची for all of the three GS optional and essay तीनटा जाक ପାଇଁ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हे जाईची. चाहिले आपण ऑफिस को फोन करी कि जॉइन करि परिबे. मेंस आंसर राइटिंग देन मेंटरशिप भी प्रोवाइड होची. ठीक अछि एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 20th October 2025. जहाँ भी क्लास रे मु पढ़ेबी स्लाइड्स रो पीडीएफ आपण माने डाउनलोड करि परिबे फॉर योर रिवीजन by clicking the link in the comment section. Comment section रे लिंक ता दे दिया जिवो से लिंक रे क्लिक करिकि आजिरो जहाँ भी स्लाइड्स रहिची ताकू डाउनलोड करि परिबे. फर्स्ट हमें देखि नबा आजि सबुतिक जीएस पेपर 3 रो टॉपिक्स अछि. फर्स्ट हमें देखिबा कि फर्स्ट डिस्कस करबा आमो सुवाहक स्कीम ऊपर गोटे न्यूज अछि. ओडिशा ईवी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 ता ऊपर गोटे न्यूज अछि. 25th इंटरनेशनल अंजलि फेस्टिवल देन नेशनल वाटर अवार्ड RCCF बरहमपुर सर्कल आ ऊपर गोटे न्यूज अछि. वी विल डिस्कस JSJB अवार्ड 2025 फॉर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स. एटा एक्चुअली NIOS and Odisha government memorandum of understanding for out of school children. Mission Power integrated push for power, water and roads in Odisha. देन क्लाइमेट चेंज आसीगला. क्लाइमेट चेंज ऊपर आज गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज अछि. जो बरुणई आइलैंड अछि केंद्रापड़ा रे सी एबे वल्नरेबल हे जाईची ड्यू टू क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स बरुणई आइलैंड एंड श्राइन ऑफ ओडिशा. पेंटेड स्टॉर्क्स देखा जाइचंदी. पेंटेड स्टॉर्क्स इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर स्पीशीज वाला पार्ट जो एनवायरनमेंट रो रहुची जहार स्टेटस साइंटिफिक नेम कोठी देखा जानती आ कोठी देखा जानती नहीं तांकर हैबिटेट कोन जो गुडी को प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पई बहुत इंपोर्टेंट ताको हमें डिस्कस करबा काहे ना न्यूज रे पेंटेड स्टॉर्क्स अछि आ जो माने गहिर मठारे देखिबा को मिलिचंती. ठीक अछि फर्स्ट ऑफ ऑल पर MCQ मु 15 सेकंड्स टाइम देबी. 15 to 20 सेकंड्स जदि MCQ लेंदी थिबो तो 20 सेकंड्स मु देबी टाइम टू अटेम्प्ट. समस्त तो प्रीवियस क्लास अटेंड करिथिले ए सब MCQ मु सेई करंट अफेयर्स अंडर रे इंक्लूड करथिली आ जो माने लाइव चैट रे आंसर दउथिले तो भलो कथा आ जो माने दउ नथले कि जो माने भी देइथबे समस्त जो माने जॉइन हेइचंदी से माने ए MCQ रो एबे आंसर करबा को ट्राई करिवे. राइट हो कि रॉन्ग हो जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट. ओके फर्स्ट क्वेश्चन कहला IIM संबलपुर रिसेंटली सी गोटे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से साइन करिछि श्री श्री यूनिवर्सिटी संगरे कोथि पई कि इनोवेशन और होलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करबा पई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोलैबोरेशन आर करेक्ट. करेक्ट पचारछि. The MOU focuses on areas like
artificial intelligence, stress management and spirituality. स्टेटमेंट नंबर 2 कहिला कि यार एम होची कि से केमिति मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन को एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज संगे इंटीग्रेट करिवो बा कंबाइन करिवो. The partnership involves collaboration on joint research projects and student exchange programs. कौन हमारा correct answer? Just give in 20 seconds. Question टिके lengthy अछि तो 20 seconds मु एडी time दउची and your 20 seconds starts now. आंसर टी हबो डी. जे भी एठी डी आंसर करिसेंती काराकेश तांकर आंसर ठीक अछि. आंसर हबो डी 1 2 3 वेरी गुड. स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट कोन पई ए सबुतिक स्टेटमेंट मु एज इट इज प्रीवियस क्लास रे पढाइची तो जो मानकर भूल होउची तो एठू जानि नियंतु कि टिके रिवीजन दरकार अछि. सो एठी तो मु कहि दउची कि ए जो एमओयू टा रहिला से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्पिरिचुअलिटी ए सबु को कवर करूची आ फोकस करूची कि केमिति मैनेजमेंट को एथिक्स और वैल्यू संगे इनकॉर्पोरेट करि परिबो बा क्लब करि परिबो and includes joint research and student exchange plans. Okay. Nai C hoboni answer about D. 1, 2 and 3 all of them are correct. Next question. Consider the following statements about paired avoset. Paired avoset upare mu discuss करथिली as it is next previous class रे. Sorry. Recently sighted at Chilika Lake, Odisha. It is a migratory bird species preferring shallow brackish water and mud flats. Habitat देदेला first statement रे and listed as endangered under IUCN red list. Third statement रे कहिछि कि ए जो species टा its distinct upturned beak and black and white plumage रहिछि. तार characteristic एठी देला. Chilika Lake where it was spotted is a Ramsar site located in Odisha. आ भितरु को statement correct अछि 1 2 and 3 only, 1 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1 and 4 only. Question current affairs सबु जाक statement अछि जहा भी provide अछि as it is previous class रे मु सबु describe करछि बहुत भल से and I am really hoping कि समस्त यार ठीक आंसर देबे. 15 seconds starts now. Do give the correct answer. Answer of B. Yes. First C दोथिले आंसर एबे ठीक अछि. करेक्शन करचंदी जो माने भी आंसर दोथिले बी आंसर हबो 1 3 and 4 only. Statement 1 correct अछि काना एटा गोटे migratory water found in shallow brackish water or mud flats paired avoset. आर IUCN रे तार status कोन least concern and statement रे हमर कोन दितला endangered maybe. ओके तो सेति पई कि जहा भी IUCN हैला कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर रे हैला तांकर पोजीशन बा स्टेटस कोन एटा मने रखिबा बहुत इंपोर्टेंट. बार बार रिवाइज करबा भी इंपोर्टेंट काहे कि ना एग्जाम रे एग्जामिनर जते बेले क्वेश्चन सेट करे एठी कंफ्यूजन बा गोटे रॉन्ग स्टेटस पकई देबाटा बहुत इजी एंड जदी रिवीजन नथिबो मने नथिबो ताहले एठी ही समस्त कंफ्यूज हेबे आ भूल हे जिवो. एठी प्राय पिलांकर भूल हुए when it comes to species related question in exams. Not endangered मने रखिबे एटा होची least concern. Famous for its upturned beak and black and white plumage. Chilika Lake गोटे रामसर साइट एटा समस्त जानिथिबे. Prelims pointers किछि हम एठी कोन उठेबा कि जो पाइड एवोसेट रहिला से माइग्रेटरी लीस्ट कंसर्न स्टेटस तारा अपटर्न बीक रहिछि एंड चिलिका लेक होछि रामसर साइट मेजर विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. बुझेला. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईस्ट कोस्ट रेलवे
EcoR launched a major safety fencing drive. Consider the following statements. The fencing initiative covers 3,000 km of tracks across Khurda Road, Sambalpur, and Voltaire divisions. Project aims to reduce trespassing, enhance safety, and enable higher train speeds. Initiative is a part of government's mission Raftar to improve average train speeds. कौन हबो correct answer? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, or 1, 2 and 3? 15 seconds I am giving. Answer is D. 1, 2 and 3. Karakesh kara ठीक अछि. Very good. Statement number 1 correct अछि. काहेकि ना fencing जो drive टा carry out होउची से 3000 plus kilometer cover करूची in area Khurda Road, Sambalpur and Voltaire division रे. Then तार main goals होची कि केमिति trespassing को stop करिवो, safety ensure करिवो, आउ higher speeds allow करिवो. Mission Raftar को एटा support करूची which focuses on improving train speed and safety. Prelims point, EcoR fencing drive 3000 km, reducing trespass, boost speed, linked with Mission Raftar for speed enhancement. Next question, Potagod Fort upare अछि. Consider the following statements about Potagod Fort, जोटा कि recently एबे news रे थिला. First statement, the fort is located along the Rushikulya river in Ganjam district of Odisha. It derives its name from its condition of being buried. Pota. एटी ओडिया रे रिलेट करि परथिबे. Being buried under sand and soil for decades. The Archaeological Survey of India has officially declared it a World Heritage Site. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1, 2, 3. 15 seconds starts now. आंसर टी हबो ए 1 and 2 only. पोतागढ़ फोर्ट जे कि जहार लोकेशन रही छी नियर ऋषिकुल्या रिवर इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट. एंड स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि. जो नेम टा पोतागढ़ मु एटी कहिली कि ओडिया रे रिलेट करि परथिबे. पोता पोता मीन्स कोन बरीड as the fort remain buried under sand and soil. Statement number 3 incorrect अछि. ASI सेमति किछि डिक्लेयर करेनी पोतागढ़ फोर्ट को as a world heritage site. So statement number 3 incorrect हे गला. पोतागढ़ माने होछि buried fort, एटा मन रखिबे. आ एटा कोठी लोकेटेड अछि गंजाम रे नियर ऋषिकुल्या रिवर. It is not a world heritage site. Next question को जिबा. With reference to the 15th Finance Commission, 15th Finance Commission grants जोटा कि recently एबे ओडिसा को रिलीज हेची. Consider the following statements. ए grants ऊपर previous class रे मु डिस्कस करछि. I hope समस्त previous class को revise करके आस्थिबे. And as it is मु जहा जहा statements previous class रे डिस्कस करथली, as it is statements ही question रे अछि. The grants are provided to strengthen rural local bodies and Panchayati Raj institutions. Untied grants can be used for any purpose, including salaries and establishment costs. 15th Finance Commission was established under Article 280 of the Constitution. The 11th schedule of the Constitution lists subjects under which Panchayats can use such funds. ठीक है जी. Then correct option कौन होगा? 1, 3 and 4 only, 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only. I am giving 20 seconds for you to answer this question.
आंसर चेक करवा आंसर हम ए संबित बेहेरा वेरी गुड 1 3 and 4 आउ भानुप्रिया भी करेक्ट आंसर देइचंदी वेरी गुड स्टेटमेंट 1 करेक्ट इथपे काना जो 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट रहिला दे आर मेंट टू स्ट्रेंथन द रूरल लोकल बॉडीज और द पंचायत्स स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट काइना जो अनटाइड ग्रांट्स रही छी सेगुडी को केबे भी सैलरी बा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट पई की यूज हे परिबनी सेगुडी को केवल बेसिक सर्विसेज पई की यूज हबो दे मस्ट बी यूज्ड फॉर बेसिक सर्विसेज फाइनेंस कमीशन एटा आसु छी आर्टिकल 280 अंडर रे समस्त पॉलिटी यदि पढ़िथिबे एटा क्लियर थिबे 11th शेड्यूल लिस्ट सब्जेक्ट फॉर पंचायत्स बेसिस फॉर फंड यूटिलाइजेशन केमिति फंड जोटा आसुची बा ग्रांट्स आसुची तो केमिति यूटिलाइज करियबो सेटा 11th शेड्यूल अंडर रे जहां भी सब्जेक्ट्स अछि जहां भी फंक्शन अछि पंचायत्स रो एटा भी सेतरे इंक्लूड अछि 15th फाइनेंस कमीशन एठु हमें कोन पॉइंटर्स उठैले कि आर्टिकल 280 रूरल लोकल बॉडीज को सपोर्ट करूची देन अनटाइड ग्रांट्स जो रहिला कि नो सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूज पंचायत सब्जेक्ट्स कोथरे अछि 11th शेड्यूल रे अछि With reference to recent study initiated by AIMS Bhubaneswar on cycat toxicity in Odisha, consider the following statements. The study focuses on the neurotoxin BMAA found in cycad plants traditionally consumed by some tribal communities. Cycads are flowering plants. They have evolved in the last century. BMAA exposure has been associated with the neurodegenerative diseases such as Parkinsonism and ALS. The research is being conducted jointly by AIMS Bhubaneswar and Nehu Shillong. आ भितरु कोटा करेक्ट अछि 20 सेकंड्स देबी मु आ पई ओके यार एडी एक्सप्लेनेशन टा एठी मु इंक्लूड करिनी बट मु एठी कहि दउची The study focuses on neurotoxin ए जो साइकड टॉक्सिसिटी माने जो साइकड प्लांट रु ना गोटे न्यूरोटॉक्सिन रिलीज हुए BMAA जोटा कि साइकड प्लांट्स रे सेटा रिलीज होचे आ जेते बेले से साइकड प्लांट्स को किछि ट्राइबल कम्युनिटी से माने कौन करूछंदी कंज्यूम करूछंदी ता लीफ हैला ता स्टीम हैला तो सेथिरे तांकर कोन होची जो BMAA एक्सपोजर रोची सेटा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस कॉज करूची सच एज पार्किंसनिज्म आउ ALS तो फर्स्ट आउ थर्ड स्टेटमेंट आमर ठीक है गला रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड जॉइंटली बाय एम्स भुवनेश्वर एंड नेहू शिलोंग ए फैक्ट मने रखिबे दिस इज फैक्चुअल एंड एटा भी ठीक अछि सो 1 3 एंड 4 होची करेक्ट आंसर जो माने ए दोचंदी करेक्ट आंसर संबित बेहेरा गुप्ती वेरी गुड Subhadra Shakti Mela last MCQ recently inaugurated in Odisha consider the following statements eta hochi mission Shakti department ro gote initiative aimed at promoting women entrepreneurship the mela features participation self help groups from Odisha only live demonstrations of traditional crafts and weaving were part of the event the mela aims to promote financial inclusion and economic empowerment of women kon haba correct answer
संबित बेहेरांकर आंसर करेक्ट अछि डी 1 2 3 एंड 4 हबो इनिशिएटिव एटा मिशन शक्ति डिपार्टमेंट अंडर रो गोटे इनिशिएटिव सुभद्रा शक्ति मेला ठीक अछि आ एटा कोठी हेतिला जनता मैदान भुवनेश्वर रे हेतिला एंड एटा प्रमोट करे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को मेला फीचर्स पार्टिसिपेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम ओडिशा ओनली काइना ओडिशा रो सबु 30 डिस्ट्रिक्ट्स रू फ्रॉम ऑल 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से माने आसीतिले एंड पार्टिसिपेट करतिले अराउंड 700 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन से माने कोन करतिले पार्टिसिपेट करतिले अराउंड 300 स्टॉल से माने लगैतिले एमती छोट छोट डिटेल्स केतरा स्टॉल लागिला कोन ये इंपोर्टेंट नहीं जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट मु कहूची लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट वीविंग एगुडी को भी इवेंट रो पार्ट थिला एब्सोल्युटली करेक्ट मेला एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन फर्स्ट स्टेटमेंट रू ही फोर्थ स्टेटमेंट क्लियर हो जेहेतु एटा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करूची तो ऑब्वियसली वुमेन मानकर फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी से प्रमोट करूथिबो एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी बूस्ट करूथिबो सो 1 2 3 एंड 4 हबो करेक्ट आंसर आज डिस्कशन आम स्टार्ट करबा करंट अफेयर्स रो एंड किछि किछि करंट अफेयर्स अंडर रे मु से रिलेटेड एमसीक्यू भी प्रोवाइड करिबी जो माने एटी लाइव चैट रे आंसर करि परिबे एंड किंतु तारो डिटेल आंसर और एक्सप्लेनेशन सेटा नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस होबो आमो सुवाहक स्कीम जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स रो पार्ट प्रीलिम्स और मेंस दीटा पई इंपोर्टेंट न्यूज रे कोन पई अछि ओडिसा रो जो कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहिला सी गोटे एसएलबीसी संगे गोटे मीटिंग कंडक्ट करिछि एसएलबीसी मेंबर बैंक्स को संगे गोटे मीटिंग कंडक्ट करिछि केमिति आत्मनिर्भर महिला सुवाहक स्कीम को इफेक्टिवली रोल आउट करा जाऊ जल्दी केमिति ताको रोल आउट करा जिवो बा इंप्लीमेंट करा जिवो आत्मनिर्भर महिला सुवाहक स्कीम बैंक्स अग्रीड टू फास्ट ट्रैक लोन्स जहाँ भी से मानकर लोन्स दबार अच्छी ए स्कीम रिलेटेड से माने ताकू केमिति से प्रोसेस को एक्सेलरेट करिवे केमिति जल्दी करिवे केमिति स्पीडली करिवे से माने एग्री करिसेंती एंड डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफाई करिवे सेति पई भी से माने एग्री करिसेंती टू सपोर्ट वुमेन बेनिफिशियरीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन द ड्राइविंग प्रोफेशन इज वेरी लो एटा जानिथिबे समस्ते वुमेन मानकर जो ड्राइविंग प्रोफेशन रे जो पार्टिसिपेशन टा रहिछि सेटा एबे भी बहुत लो अछि ओडिसा रे एंड इंडिया रे भी सेटा लो अछि एई जो स्कीम टा हमें डिस्कस करूचे आमो सुवाहक स्कीम एटा लॉन्च हेछि गोटे जेंडर बैलेंस आनिबाकू टू प्रमोट द जेंडर बैलेंस इन द ड्राइविंग सेक्टर वुमेन मानकर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करिबाकू सेफ डिग्निफाइड वुमेन ड्रिवन मोबिलिटी सर्विस को प्रोवाइड करने को आम सुवाहक स्कीम कहले हमें कौन बुझू एटा गोटे लाइवलीहुड और एम्पावरमेंट स्कीम जो थे कि वुमेन मान को सपोर्ट करा जाउची कि से माने केमिति प्रोफेशनल 4 व्हीलर ड्राइवर्स हेबे आ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हे परिबे की फीचर्स हैला फर्स्ट तो यांकू इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करा जिवो ड्राइवर हवा पई से माने फर्स्ट व्हीकल किनिबे और जो लोन से माने को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करा जिवो सेथिरे से माने एलएमवीज किनिबे 4 व्हीलर्स गवर्नमेंट सपोर्ट मिलिबो जहां अंडर रे आसुची 10% डाउन पेमेंट गवर्नमेंट दबो देन इंटरेस्ट दबो ड्यूरिंग 3 मंथ मोरेटोरियम सीजीटी एमएससी चार्जेस भी कवर हबो एथिरे एंड एनुअल इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट पे करिवो ट्रेनिंग सपोर्ट भी वुमेन मानो को मिलुची ए स्कीम अंडर रे 4 इंस्टीट्यूट्स ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन ओडिशा 4टा इंस्टीट्यूट एमती से माने ट्रेनिंग से माने प्रोवाइड करिवे एज आउ इनकम एलिजिबिलिटी कोन 21 टू 40 इयर्स हेथिबा दरकार तांकर एज एटा होची एज लिमिट 21 टू 40 इयर्स जदि एग्जाम रे कहितिबो कि सेमति किछि एज लिमिट नाही बा किछि 35 टू 70 एमति किछि कहि देइतिबो देन सेटा रॉन्ग हबो मने रखिबे 21 टू 40 इयर्स होची एज लिमिट एनुअल फैमिली इनकम बिलो 3 लाख हेतिबा दरकार टारगेट कोन करा जाउची 1100
women सुवाहक को से माने 4 years रे क्रिएट करिवे 25-26 आड़ को 200 women सुवाहक क्रिएट हेबे देन 26-27 year रे 250 27-28 रे 300 28-29 रे 350 एडवांटेज बा सिग्निफिकेंस कोन ए इनिशिएटिव रो स्कीम रो women empowerment first of all जो थरे कि women मानकर mobility related employment enhance होबो gender diversity आनिबो ट्रांसपोर्ट सेक्टर रे देन सेल्फ रिलायंस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करिवो इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करूची जेमति कि गोटे स्टेडी लाइवलीहुड प्रोवाइड करूची इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लोकल मोबिलिटी इकोनॉमी को बूस्ट करूची गिग बेस्ड ड्राइविंग प्लेटफॉर्म को भी बूस्ट करूची सोशल इंपैक्ट गोटे आसुची पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट जो थरे कि सेफ वुमेन ड्रिवन ट्रांसपोर्ट एंश्योर होची helps break the societal barrier associated with women driving institutional support banks और government भितर गोटे coordination establish होची to ensure the smooth implementation loan guarantees and interest support reduce the financial burden बट किसी challenges एबे भी persist करूची जेमति कि wider outreach ensure करिबारे difficulty आसी पारे especially in rural areas sustained training quality in IDTRs दरकार अछि possible delays in vehicle engagement after loan sanction this is also a problem repayment pressure भी तांको रोची लोन तो नहीं जिबे किंतु repayment pressure तांको ऊपर रहुची once moratorium ends societal attitude से गुडी को एबे भी women मानु को discourage करि पारे towards this scheme way forward कौन हबा दरकार for the proper implementation of this scheme बा successful implementation कि district level support cells को strengthen करा जिबा दरकार for providing quick approvals awareness drives conduct करा जिबा दरकार in rural and semi urban areas कि केमिति women माने societal attitude जो patriarchal बा parochial attitudes रहिला सेथिरु बाहर को आसी पारि कि से माने under this scheme empower हेई परिबे provide post training placement support through government platforms regular refresher training and safety workshops offer haba darkar and partnerships encourage haba darkar with ride sharing companies and for assured opportunities MCQ टी solve करिया को try करो very easy Amo Suvahak scheme is primarily aimed at providing free scooters to women students, promoting women entrepreneurship in the driving profession, offering skill training for textile workers, establishing women only transport depots. 10 seconds दोची मो आपाई कि बहुत easy question just अबे discuss कली one liner अच्छी कौन हबार answer समस्ते करेक्ट आंसर देइछंदी वेरी गुड आंसर अब बी ओडिशा ईवी पॉलिसी 2.0 पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इकोनॉमिक्स रो पार्ट प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ पई कि हमर रेलेवेंट अछि एटा न्यूज रे कहिला कि ओडिशा एबे प्रिपेयर करूछि ता निजको केमिति इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ईवी पॉलिसी 2.0 को जल्दी रु जल्दी फाइनलाइज करि परिबो आफ्टर अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इन भुवनेश्वर एंड ए जो पॉलिसीटा रहिला ओडिशा ईवी पॉलिसी एटा स्टेट रो आम ओडिशा रो गोटे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन अछि विकसित ओडिशा 2036 ए पॉलिसीटा ए विजन सहित अलाइन करूची ओडिशा ईवी पॉलिसी तार फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करिथिला
to promote clean mobility, reduce pollution and improve the charging infrastructure. ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍‌ର ଆଡପ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ କିଣିବା ବଢ଼ିଛି, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବଢ଼ିଛି। ସୋ ରାଇଜିଂ ଇଭି ଆଡପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଯେମିତିକି ପିଏମ୍ ଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଅପଡେଟେଡ୍ ପଲିସି ରିକ୍ୱାୟାର କରୁଛି। ଇଭି ପଲିସି 2.0 ତାର ଏମ୍ ହେଉଛି କି କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍‌ର ଲିଡରସିପ୍ ଇନ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେବ। ଇଭି ପଲିସି 2.0 ଏଇ ଏରିଆକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। What is Odisha EV Policy 2.0? এটা ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ପଲିସି ଥିଲା, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ୍ଡ ବା ପଲିଶ୍ଡ ଭର୍ସନ, ଟେଲର୍ଡ ଟୁ ଏବେ ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ବା ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ନିଡ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଟେଲର୍ଡ ଭର୍ସନ ବା ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ୍ଡ ରିଆରେଞ୍ଜଡ ଭର୍ସନ ଓଡ଼ିଶା ଇଭି ପଲିସି 2.0 strengthen framework to promote and ଏଟା କ'ଣ promote କରେ ଇଭି adoption କେମିତି fast ହବ ସେଟା promote କରୁଛି। private sector participation, stronger incentive, state wide charging infrastructure, sustainable mobility ecosystem, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ promote କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଭି ପଲିସି 2.0। କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି? କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଏନର୍ଜି, ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, OSRTC, CRUT, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର୍ସ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଇଭି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस जोटा भुवनेश्वर रे हैला सेतरे कोन कोन प्रपोजल्स डिस्कस करा जायछि, जेमति कि जो परचेज इंसेंटिव्स जो दिया जाउछि, ईवी किनिले जो इंसेंटिव्स दिया जाउछि परचेज इंसेंटिव्स ताकू एनहांस करबा को डिस्कस करा जायछि। हायर सब्सिडीज प्रोवाइड फॉर 2 watt 3 watt 4 watt एंड कमर्शियल ईवीज। Okay, possible extension of incentives for e-buses and e-good vehicles, retrofitting and the scrappage benefits, जो पुराना EVs रहिला तांकु नुआ EVs को कन्वर्ट करिया पई सपोर्ट प्रोवाइड करा जिवो। आउ जो पुराना पॉल्यूटिंग व्हीकल्स अछि तांकु स्क्रैप करिया पई कि रिबेट प्रोवाइड करा हबो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम अंडर रे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रे एक्सपेंशन हबो स्टेट वाइड। मोर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस इन सिटीज एंड हाईवेज, सिटीज और हाईवेज रे अधिका पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस एस्टाब्लिश हबो। फोकस ऑन रूरल चार्जिंग एक्सेस, ओके, रूरल चार्जिंग एक्सेस ऊपर भी फोकस रही। स्टेट ईवी फंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड, डेडिकेटेड फंड गोटे क्रिएट करा जायछि जोथरे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ईवी इनिशिएटिव को एंश्योर करा जिवो। देन इंसेंटिव्स को सपोर्ट करा जाउछि, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एडवांटेजेस कोन? फर्स्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल आमे अडॉप्ट पॉलिसी बा अडॉप्शन कोथ पई हेतला काहे ना पोल्यूशन बढ़ुची, सो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल बेनिफिट्स अछि। वेहिकुलर पोल्यूशन एथरे रिड्यूस हबो। क्लाइमेट कमिटमेंट्स जहाँ भी रही इंडिया रो सेटा नेट जीरो हो कि टेम्परेचर कि एयर रे पोल्यूटेंट्स लेवल हो, जहाँ भी क्लाइमेट कमिटमेंट्स रही नेशनली ताकू सपोर्ट करिवो। ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट करूची। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स रही जेमति कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग आउ जॉब क्रिएशन को बूस्ट मिलिबो। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एनकरेज हबो। मोबिलिटी ऑप्शन बढ़िबो अक्रॉस अर्बन एंड रूरल ओडिशा। ट्रांसपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, जो ई बस मान को स्ट्रेंथन कले से माने स्ट्रेंथन्स द ई बस फ्लीट्स, improves the electric vehicle infrastructure, making electric vehicles more accessible. long term sustainability एथरे एंश्योर होची, जेमति कि स्टेट ईवी फंड, गोटे डेडिकेटेड स्टेट ईवी फंड क्रिएट करा जायछि जोटा कि कंटिन्यूअस फंडिंग को एंश्योर करिवो। स्क्रैपेज आउ रेट्रोफिटिंग सेटा ओल्ड व्हीकल लोड को रिड्यूस करूची। चैलेंजेस कौन रहिला बा डिसएडवांटेजेस कौन रहिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रे हाई इनिशियल कॉस्ट रही, ताको इम्प्लीमेंट करबा पई से स्टेप गुडा इनिशियली बहुत हाई कॉस्ट पे करिया पड़िबो डिस्पाइट द इंसेंटिव्स।
रोबस्ट स्टेट वाइड चार्जिंग नेटवर्क दरकार जेहेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेमानकु चार्ज हबाकू पड़िबो टू फंक्शन तो सेथिपई कि नेशन रे सबुठी बा स्टेट रे सबुठी चार्जिंग नेटवर्क थिबा दरकार एमती नाही कि जणे पैसेंजर एटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेकी जति दूर को जाउचंदी आउ जदी बाटरी कोनोसी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नै आउ तांकर चार्ज चार्ज जदी सरी गला व्हीकल रो ताहाले से सेठी रहिले Okay, so need for robust statewide charging network, battery disposal and recycling challenges. Electric vehicles रे charge होची तो obviously एथरे battery use होची and ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ୍ସ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି କି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କେମିତି ଡିସ୍ପୋଜ କରାଯିବ ରିସାଇକଲ କରାଯିବ ଏଥିରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି କୋର୍ଡିନେସନ ରିକ୍ୱାୟର୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ मेनी डिपार्टमेंट्स जो वेरियस डिपार्टमेंट्स आमे फर्स्ट डिस्कस कले तांको भितरे केमिति कोर्डिनेशन रहिबो आकु इम्प्लीमेंट करिबारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिबारे रेट्रोफिटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट बी रेगुलेटेड फॉर सेफ्टी वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार ए जो ईवी पॉलिसी 2.0 ताको जल्दी फाइनलाइज करा जाऊ विथ क्लियर टाइमलाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करा जाऊ टुवर्ड स्मॉल टाउन्स हाईवेज रूरल एरियाज बैटरी रिसाइक्लिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करा जाऊ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एनकरेज करा जाऊ थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पीपीपी मॉडल्स अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करा जाऊ फॉर ईवी वर्कफोर्स लिंक ईवी adoption to public transport reforms e-buses and e-taxis बुझियला नेक्स्ट एमसीक्यू टा अटेम्प्ट करो बहुत इजी एमसीक्यू आज मो सब इजी इजी एमसीक्यू देइची समस्ते करेक्ट करिवे आज एंड आई होप समस्ते एबे डिसिप्लिन सहित देखुथिबे सेशन टिकु समस्ते करेक्ट करिवे आंसर देबे व्हिच सेंट्रल स्कीम इज लिंक्ड टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ओडिशा ईवी पॉलिसी 2.0 पीएम गति शक्ति पीएम ई ड्राइव फेम 3 एंड पीएम मित्रा आ भितरु कोउटा हबार आंसर 10 सेकंड्स दउची मु आंसर आसिला समस्ते बी आंसर करछन्ती वेरी गुड माने समस्ते अटेंटिवली सेशन टा से माने सुनुचन्ती यस 25th इंटरनेशनल अंजलि फेस्टिवल कहले आमे कोन बुझू एटा गोटे इंटरनेशनल इंक्लूसिव फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ ऑल एबिलिटीज तो ए फेस्टिवल थ्रू रू कोन होची कॉन्फिडेंस क्रिएटिविटी सोशल इंक्लूजन और डिसेबिलिटी राइट्स को प्रमोट करा जाउची एबे रिसेंटली न्यूज रे अछि काहे ना 25th इंटरनेशनल अंजलि चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल कंडक्ट हेतिला गोल्डन जुबली ईयर तारो वाज इनागुरेटेड इन भुवनेश्वर एनुअली एटा को ऑर्गेनाइज करा जाए बाय स्वाभिमान लेड बाय श्रुति महापात्र फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज बुझियला बैकग्राउंड कोन एटा 25 इयर्स आगु स्टार्ट हेतिला as a modest initiative to create an inclusive cultural and learning space for children with disabilities. Children with disabilities मानकु केमिति गोटे inclusive cultural और learning space provide करा जिवो सेइत पई कि गोटे modest initiative हिसाब रे 25 वर्ष आगु स्टार्ट हेतिला एबे सेटा इवॉल्व करी कि इंडिया रो वन ऑफ द मेजर inclusive youth festival रो गोटे entirely एटा कंडक्ट करा जाय थ्रू वॉलंटियर ड्रिवन एफर्ट्स रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन 2024 एडिशन रो हाइलाइट्स कोन थिला 12 to 16 नवंबर जाके एटा कंडक्ट हेतिला एट आदिवासी एग्जीबिशन ग्राउंड भुवनेश्वर हजार चिल्ड्रन thousands of children from all 30 districts of Odisha participate करथिले 18टा इंडियन स्टेट्स रु बाकी स्टेट्स रु भी डेलीगेट्स माने आस्तेले इंक्लूडिंग लद्दाख लक्षद्वीप जम्मू एंड कश्मीर एटसेट्रा इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी आस्तेले फ्रॉम श्रीलंका डिग्निटरीज मानकर नेम एते इंपोर्टेंट नो जस्ट गो थ्रू इट कि प्रभाती परिडा हमर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर
Dignitaries names are not important for your exam रे पचारिबनी, so we are going to skip it. थीम एंड एक्टिविटीज कौन थिला? थीम 2024 रो माइथोलॉजी फोकलोर एंड लेजेंड्स। ओके, एटा सेलिब्रेट करे स्टोरीज ऑफ गॉड्स हीरोज ट्रेडिशन अक्रॉस द कल्चर्स। वर्कशॉप और कॉम्पिटिशन्स भी हुए इन डांस म्यूजिक थिएटर आर्ट क्राफ्ट फोटोग्राफी स्टोरी टेलिंग योगा क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग। अवार्ड्स भी दिया जाए, अंजलि अवार्ड फॉर ब्रेवरी सुरेश चौधरी को दिया जाइए, अंजलि स्टूडेंट स्कॉलरशिप सुलेखा बराई, रिलीज ऑफ अंजलि कैंप बुलेटिन भी रिलीज होइछि। एडवांटेज कौन ए फेस्टिवल रो कि सोशल इंक्लूजन प्रमोट होची, एक्सेप्टेंस जो डिसेबल चिल्ड्रन रहिले बा यूथ रहिले तांकर एक्सेप्टेंस एंड विजिबिलिटी को एनकरेज करा जाउची। जो स्टिग्मा से अराउंड अछि डिसेबिलिटी अराउंड अछि जो स्टिग्मा ताको ब्रेक करूची एंड प्रमोट इंक्लूसिव सोसाइटी। skill and talent development जो provides platforms to showcase creativity and artistic abilities, confidence communication skill और leadership qualities को build करूची। cultural exchange participation from various states and countries promote unity and diversity। thematic approach helps preserve cultural heritage। community impact volunteer driven model strengthens the civil society participation। youth ମାନଙ୍କୁ inspire करूची towards empathy service and inclusivity। challenges persist करूची जेमती कि जो voluntary efforts ऊपर dependence may limit the scalability। need for better infrastructure and accessibility for differently abled patients। फंडिंग रे फंडिंग कम आसुची, फंडिंग कॉन्स्टेंट्स रही फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। पार्टिसिपेशन को एनश्योर करूची फ्रॉम रिमोट रूरल डिजेबल्ड चिल्ड्रन रिमेन्स डिफिकल्ट। वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार कि गवर्नमेंट सपोर्ट और मल्टी स्टेक होल्डर फंडिंग को एनहांस करा जाऊ, एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करा जाऊ एट फेस्टिवल वेन्यूज, ईयर लॉन्ग ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करा जाऊ एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करा जाऊ बियॉन्ड द फेस्टिवल। स्कूल्स एनजीओज और इंटरनेशनल डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप को संगे पार्टनर कले एटा गोटे फर्दर होलिस्टिक अप्रोच आनिबो टुवर्ड्स द disabled children and youth। scale the festival model to more states। the 2024 theme of the Anjali festival कौन थिला? celebrating diversity disability and rights mythology folklore and legends culture of Odisha। कौन हबार आंसर? ओके, समस्ते करेक्ट आंसर दौरान, वेरी गुड। नेक्स्ट आमे जिबा नेशनल वाटर अवार्ड प्रोवाइड करा जायछि आरसीसीएफ बरहमपुर सर्कल। प्रिलिम्स सॉरी प्रिलिम्स और मेंस दीटा जाक पई इंपोर्टेंट। नेशनल वाटर अवार्ड्स कहले कोन बुझू? नेशनल वाटर अवार्ड स्टार्ट हेथिला कि केमिति वाटर यूज एफिशिएंटली हबो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन को एनकरेज करिया पई कि अवार्ड रे कोन कोन इंक्लूड होची? साइटेशन ट्रॉफी आउ कैश प्राइज इंक्लूड रहउची अवार्ड रे।
न्यूज रे कौन पई अछि आरसीसीएफ बरहमपुर सर्कल ओडिशा से फर्स्ट रैंक सिक्योर करिछि जॉइंट विनर ये गोटे इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट अदर देन स्कूल एंड कॉलेज आउटसाइड कैंपस कैटेगरी एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स से टॉप पोजीशन टा शेयर करिछि विथ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ओके नेशनल वाटर अवार्ड कहा द्वारा इंस्टीट्यूट करा जाइतला डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन एटा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर रे आसुची this is very important these two points are very important for your prelims exam कहीं ना डिपार्टमेंट आउ मिनिस्ट्री जे कौन सी स्कीम हो इनिशिएटिव हो अवार्ड हो बा पॉलिसी हो को डिपार्टमेंट आउ को मिनिस्ट्री अंडर रे सेटा आसुची और को डिपार्टमेंट सेथरे इंक्लूड रहउचंती सेटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे ऑप्शन रे ठीक अछि aim होची to recognize and promote excellence in water conservation resource management and sustainable practices across India 6th edition रे totally 46 winners रहिचंती 10टा कैटेगरी रे आरसीसीएफ बरहमपुर सर्कल एटा गोटे रीजनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन यूनिट इन ओडिशा एंड एटा रिकॉग्नाइज करा जाय तार इनोवेटिव लार्ज स्केल वाटर कंजर्वेशन मेजर implemented since August 2023 की वाटर कंजर्वेशन वर्क्स जोड़ाक हेई सारची जेमति कि पांचटा फार्म पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट हेची 24,317 staggered trenches for groundwater recharge to reduce soil erosion 3000 plus pits for water retention and plantation भी कंस्ट्रक्ट हेची 8 किलोमीटर trenches for moisture conservation in forests okay अपकमिंग सेरेमनी नवेम्बर 18 रे आसुची चीफ गेस्ट आमर रहिबे आमर प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट द अवार्ड्स से 18th नवेम्बर रे जो सेरेमनी हबो से अवार्ड को प्रेजेंट करिवे विनर मानकू एडवांटेजेस बा सिग्निफिकेंस कोन फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स तो रहउची काने एतरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज एनहांस होची सॉइल एरोजन रिड्यूस होची एफोरेस्टेशन और बायोडायवर्सिटी रिवाइवल को सपोर्ट मिलुची कम्युनिटी बेनिफिट्स फार्म पॉन्ड्स जो कंस्ट्रक्ट हेची सेटा वाटर अवेलेबिलिटी जो रही एग्रीकल्चर पाई की ताको एनहांस करूची बा बूस्ट करूची सेकंड ड्रॉट प्रोन एरियाज जो रहिले तांको हेल्प करूची बूस्ट लाइवलीहुड एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज स्टेट लेवल इंपोर्टेंस ओडिशार इमेज को से बूस्ट करूची इन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट एनकरेजेस रेप्लिकेशन ऑफ बरहमपुर मॉडल अक्रॉस अदर सर्कल्स नेशनल इंपोर्टेंस कोन इंडिया रो जो गोल रही वाटर सिक्योरिटी को नेगी ताको सपोर्ट करूची एंड शो करूची हाउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन किसी चैलेंजेस बा डिसएडवांटेज भी रही जेमति कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रेंचेस एते गुडे जो ट्रेंचेस कंस्ट्रक्ट हेची ताको मेंटेन करिबा लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करिबा एटा गोटे एक्चुअली गोटे टफ टास्क लोकल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करि पारे फॉरेस्ट टेरेन एंड मैन पावर स्लो कंस्ट्रक्शन ए सब रे गैप्स रही कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट समटाइम्स रिमेन लिमिटेड वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार जो ट्रेंच बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग रही स्केल अप करा जिबा दरकार एक्रॉस ओडिशा जीआईएस मैपिंग को यूज करा जिबा दरकार फॉर वाटर प्लानिंग लोकल कम्युनिटीज मान को एनगेज करा जिबा दरकार एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मेंबर्स रहले तांको मध्ये एनकरेज करा जिबा दरकार टू एंगेज इन फॉर मेंटेनेंस integrate work with मनरेगा and sustainability promote eco-friendly check dams and percolation tanks MCQ आसीगला RCCF बरहमपुर सर्कल won the first rank in national water awards under which category को category under से जीती जी first best urban water management second best water warrior best institute other than school and college outside campus best NGO for water conservation कौन हबार आंसर 10 seconds दउची मु your 10 seconds starts now
करेक्ट आंसर हम सी जस्ट मुझे कही कि बेस्ट इंस्टीट्यूट अदर देन स्कूल एंड कॉलेज आउटसाइड कैंपस ए कैटेगरी अंडर रे ब्रह्मपुर सर्कल फर्स्ट रैंक अचीव करिछि। JSJB award 2025 फॉर ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स एनवायरमेंट पार्ट ओडिशार 5टी डिस्ट्रिक्ट गंजाम कलाहांडी रायगड़ा कटक मयूरभंज से माने जल संचय जल भागीदारी JSJB अवार्ड रिसीव करिसेंती। ए अवार्ड टी प्रेजेंट करा जायछि बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 18th November प्रेजेंट करा जिवो विल बी प्रेजेंटेड at विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। Recognition for outstanding work under Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain JSACTR जल शक्ति अभियान अंडर रे आउटस्टैंडिंग वर्क से माने करिकी से माने ए अवार्ड रिसीव करछंती। बैकग्राउंड JSJB रो फुल फॉर्म कोन जल संचय जल भागीदारी अवार्ड केबे लॉन्च हेतिला 2024 सेप्टेम्बर रे लॉन्च हेतिला बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अगेन मिनिस्ट्री आसीगला रिमेंबर दिस अंडर पर्पस कौन केमिति कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करा जिवो जन भागीदारी इन वाटर कंजर्वेशन पार्ट ऑफ लार्जर नेशनल गोल एटा जो नेशनल गोल रही तार गोटे पार्ट वाटर सिक्योरिटी ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट वाटर गवर्नेंस it is a part of this. Odisha has been actively involved in rainwater harvesting, borewell recharge, revival of traditional water bodies, and community-led water campaigns. JSJB initiative कहले कौन जल शक्ति अभियान रे एटा गोटे पार्ट जल शक्ति अभियान कैच द रेन CTR जहाँ को कही था एंड आर मोटो कौन जन शक्ति और जल शक्ति पीपल्स पार्टिसिपेशन इज की टू वाटर कंजर्वेशन दिस इज द मोटो रिमेंबर दिस फोकस एरियाज रे कौन कौन इनक्लूड रहउची जेमति कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल रिचार्ज सिस्टम्स रिवाइवल ऑफ पॉन्ड्स और टैंक्स कम्युनिटी ड्रिवन वाटरशेड एक्टिविटीज इंडिया वाइड अचीवमेंट जेमति कि 27.6 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बिल्ड हेची जोटा 10 लाख टारगेट थिला किंतु 27.6 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बिल्ट हे सरची। की अचीवमेंट्स ऑफ ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स से माने रिकॉग्नाइज हेचंदी फॉर देयर इफेक्टिव ग्राउंड वाटर रिचार्ज कंस्ट्रक्शन एंड रेजुवेनेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स सक्सेसफुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मॉडल्स वर्क इन ड्रॉट प्रोन एंड ट्राइबल रीजन्स डेमोन्स्ट्रेटेड मेजरेबल रिजल्ट्स इन increased storage capacity, improved groundwater levels, enhanced water availability for agriculture and drinking. Award details. Category 3 रे आसुची water conservation and groundwater recharge. प्राइज मिली each district से माने 25 lakhs each से माने cash prize receive करिवे plus citation तांको दिया जिवो from Ministry of Jal Shakti. हायर कैटेगरी से कैटेगरी 1 रे 2 crore रही प्राइज मनी एंड कैटेगरी 2 रे 1 crore। इंपोर्टेंस कौन कम्युनिटी लेड वाटर गवर्नेंस को बूस्ट करुची डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन को एनकरेज करुची इन वाटर मैनेजमेंट क्लाइमेट अडाप्टेशन स्ट्रेटजीज को स्ट्रेंथन करुची एंड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर को एनश्योर करिवो फॉर एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड्स लोकल कम्युनिटीज एसएचजी पंचायत से मानकर जो रोलटा रही से वाटर एसेट क्रिएशन रे सपोर्ट करुचंती। These are the advantages local water security strengthen हबो monsoon ऊपर जो dependence रही ची सेटा reduce हबो ground water level improve हबो public participation encourage हबो long lasting water assets create हबो sustainable agriculture support हबो disadvantage कौन कि किछि region एमिति अछि जोटा कि poor community participation show करूची आउ technical expertise भी एतेटा नाही to maintain the structures वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से गुडी बहुत गुडे एमिति वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रही जो गुडी एबे भी अंडर यूटिलाइज्ड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रो नीड रही और डाटा ट्रांसपेरेंसी रो भी नीड रही फंडिंग और कोऑर्डिनेशन इशू रही एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। वे फॉरवर्ड पंचायत लेवल वाटर कम्युनिटीज को स्ट्रेंथन करा जाऊ टेक एनेबल्ड मॉनिटरिंग जेमती कि जीपीएस टैगिंग बा डैशबोर्ड्स हेगला ताको प्रमोट करा जाऊ रेगुलर मेंटेनेंस को एंश्योर करा जाऊ ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियरल चेंज को इंसेंटिवाइज करा जाऊ क्लाइमेट रेजिलिएंस वाटरशेड मॉडल्स को अडॉप्ट करा जाऊ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जोड़ा रहिला स्कूल्स रे बा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रे ताको एक्सपैंड करा जाऊ।
NIOS Odisha government MOU for out of school children. Prelims and means dita ପାଇଁ important GS paper 3 ର education ଗୋଟେ sub topic ତା under ଏଟା ଆସୁଛି about NIOS ଉପରେ ଦେଖିଦେବା ଏଟା ଗୋଟେ autonomous organization ଯୋଉଟା କି ଆସେ Ministry of Education under ରେ secondary and senior secondary courses ଆସେ vocational education flexible learning modes on demand examinations student ମାନଙ୍କୁ ये support करे जो माने कि regularly school को attend करि पारंती नाही न्यूज रे कोन पई अछि एनआईओएस एबे गोटे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करिछि विथ द ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओएसईपीए टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल बट ड्रॉप आउट चिल्ड्रन जो माने रहिले इनटू एजुकेशन सिस्टम थ्रू फ्लेक्सिबल लर्निंग प्रोग्राम्स बैकग्राउंड कोन ओडिसा रो जो डिस्ट्रिक्ट गुडा रहिला सेतरे हाई ड्रॉप आउट रेट्स अछि especially in marginalized and tribal areas तो NIOS एटा प्रोवाइड करूची कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से प्रोवाइड करूची फॉर क्लास 10 एंड 12 ए जो पार्टनरशिप टा एबे हेची थ्रू द MOU ये राइट टू एजुकेशन को सपोर्ट करूची RTE मैंडेट को एंड अलाइंस विद द NEP 2020 जहा कि एम्फसाइज करूची यूनिवर्सल एक्सेस एंड मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग की फीचर्स कौन रही जो सिलेक्टेड स्कूल्स रहिले ओडिसा रे सेगुडी को एक्रेडिटेड करा जिवो एज एनआईओएस सेंटर्स जो थिरे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मानकु एनेबल करा जिवो कि से माने केमिते री एंटर पुनी करि परिबे into the education system study through flexible schedules complete class 10 and class 12 focus on districts with the high dropout and migration rates thousands of learners expected to benefit open and distance learning एटा गोटे मोड जोथरे कि जो लर्नर्स माने रहिले से माने रेगुलर क्लास अटेंड न करी कि भी से माने पढ़ी परिबे फीचर सेल्फ पेस्ड लर्निंग प्रिंटेड और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड हुए फ्लेक्सिबल असेसमेंट हुए सुइटेबल फॉर वर्किंग चिल्ड्रन माइग्रेंट्स एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एडवांटेज कौन है इनिशिएटिव रो ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस होची वर्किंग और मार्जिनलाइज चिल्ड्रन मान को फ्लेक्सिबल लर्निंग अलाउ करा जाउची इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होची एंड ब्रिजेस लर्निंग गैप्स सपोर्ट द एनईपीस टारगेट ऑफ यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन चिल्ड्रन मान को केमिति मेन स्ट्रीम स्कूलिंग और एम्प्लॉयमेंट पाथवेज रे इंटीग्रेट करा जिवो सेटा भी गोटे एडवांटेज डिसएडवांटेज बा चैलेंजेस कौन परसिस्ट रही एथरे डिजिटल डिवाइड एबे भी अच्छी दैट मे हिंडर द एक्सेस टू ऑनलाइन मटेरियल्स मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू कंटिन्यू सेल्फ पेस्ड स्टडी कैन बी डिफिकल्ट ट्रेन्ड फैसिलिटेटर्स नाहांती इन रूरल स्कूल्स जहाँ भी लर्निंग आउटकम्स रहिबो ताको मॉनिटर करिया चैलेंजिंग हेई पारे सोशल बैरियर्स रोजे पोवर्टी माइग्रेशन अर्ली लेबर एबे भी परसिस्ट करूची कम्युनिटी आउटरीच को स्ट्रेंथन करा जाओ टू आइडेंटिफाई द ड्रॉप आउट चिल्ड्रन डिजिटल सर्विसेज बाय इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करा जाओ एट एक्रेडिटेड सेंटर्स ट्रेन द टीचर्स ऑन एनआईओएस प्रोसेसेस स्टूडेंट मान को लिंक करा जाओ विथ काउंसलिंग एंड एकेडमिक सपोर्ट एनजीओस मानक संगे पार्टनरशिप करा गले लास्ट माइल डिलीवरी करी हबो देन क्रिएट इवैल्यूएशन डैशबोर्ड्स फॉर ट्रैकिंग लर्निंग प्रोग्रेस एमसीक्यू attempt this recent जो MOU साइन है NIOS और OACPA रा primarily aim कौन introducing vocational courses in Odisha government schools bringing out of school children back into formal education through flexible learning implementing NEET coaching in tribal areas promoting digital textbooks in all schools answer कौन हबो
ओके जो माने बी आंसर करछन्ती वेरी गुड करेक्ट आंसर इज बी मिशन पावर integrated push for power water and roads in Odisha economics रो टॉपिक prelims and mains हमर दीटा पई एटा जरूरी पावर मिशन कहले हमें कोन बुझो एटा गोटे यूनिफाइड इंटीग्रेटेड और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क टू एंश्योर स्पीड स्केल एंड स्टैंडर्ड ओके फोकस रहुची केमिति 100% एक्सेस डिलीवर हे पारिबो टू पावर ड्रिंकिंग वाटर एंड रोड्स इन ऑल विलेजेस ओडिशा गवर्नमेंट एबे लॉन्च करिछि मिशन पावर पावर वाटर एंड रोड्स power of full form to bridge the infrastructure gap and ensure last mile delivery for essential services across the state सिटीजन मानक तीनटा बेसिक अमेनिटीज रो रिक्वायरमेंट थाए जेमति कि पावर ड्रिंकिंग वाटर रोड एटा प्रोवाइड करा जिवो वाइटल फॉर रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट बहुत गुडे विलेजेस स्टिल एबे भी गैप्स से माने फेस करूछन्ती इन रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रोड कनेक्टिविटी एबे गवर्नमेंट एम करूची फॉर सैचुरेशन लेवल कवरेज की फीचर्स बा कंपोनेंट्स कोन इंटर मिनिस्टरियल कमिटी गोटे हबो टू मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स माने कोन करिवे से माने पंचायत वाइज स्टेटस रिपोर्ट से माने सबमिट करिवे गोटे रोड मैप गोटे स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बना जिवो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दिया जिवो फॉर वर्क कंप्लीशन कवरेज ऑफ लेफ्ट आउट हैबिटेशंस रिमोट हैमलेट्स हार्ड टू रीच एरियाज सेक्टर वाइज टार्गेट्स रही जेमती पावर यूनिवर्सल रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस प्रोवाइड करा जिवो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन करा जिवो फॉर लास्ट माइल सप्लाई वाटर रे यूनिवर्सल ड्रिंकिंग वाटर कवरेज अचीव करा जिवो बाय मार्च 2027 स्पेशल फोकस रही ऑन फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज एंड फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज रे कोन कंडक्ट हबो फ्लोराइड रिमूवल प्लान कंडक्ट हबो सेटी इम्प्लीमेंट हबो रोड्स रे लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस आ ऊपर फोकस रही सैचुरेशन ड्राइव विथ स्टैंड अलोन रोड प्रोजेक्ट्स वेर एवर नीडेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर लेड बाय डेप्यूटी सीएम कनक वर्धन सिंह देव participating departments रही एनर्जी पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल डेवलपमेंट की ऑफिसर्स किए चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड डायरेक्टर्स ऑफ रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स एमाने होचंदी की ऑफिसर्स जो माने इंक्लूड रहिबे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहले हमें कोन बुझो एटा होच गोटे मॉडल जोठी कि मल्टीपल एसेंशियल सेक्टर जेमति पावर हैला ड्रिंकिंग वाटर बा रोड से माने कोन हबे एका संगे एग्जीक्यूट हेबे रादर देन इन सिलोस एंड जेतेबेले से माने जेतेबेले एग्जीक्यूशन होची टुगेदर से माने एग्जीक्यूट होचंदी it ensures efficient resource use faster delivery avoids duplication of work and achieves saturation coverage advantage कोन कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रूरल और अर्बन एरियाज रे रही से इंप्रूव हबो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी जो रही रीजन्स रे एग्जिस्ट करूची सेटा रिड्यूस हबो रिलायबल एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड हबो एट हाउस होल्ड लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी मोबिलिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी बूस्ट हबो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट भीतर जो कोऑर्डिनेशन सेटा एनहांस हबो सो देयर विल बी बेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी address water safety concerns especially fluoride contamination डिसएडवांटेज बा चैलेंज कौन रही फर्स्ट तो कि इंटर डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन सेटा केमिति कंडक्ट करिवो से तार धेरे इशू रही इट मे स्लो द प्रोसेस फंडिंग रिसोर्स एलोकेशन कॉन्स्टेंट्स रही ट्राइबल हिली एरियाज जो रिमोट एरियाज रहिला से गुडी करे एग्जीक्यूशन डिले हे पारे एक्यूरेट डाटा ऊपर डिपेंडेंस रही फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एक्सट्रीम वेदर्स में डिसरप्ट द प्रोजेक्ट्स व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड और वे अहेड कि जो डाटा ड्रिवन मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन करा जाऊ थ्रू डैशबोर्ड्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करा जाऊ इन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपकीप ensure independent quality audits of all the three sectors independent quality audits को boost I mean encourage करा जाऊ
फ्लोराइड अफेक्टेड एरियाज जो माने रहिले तांको प्रायोरिटाइज करा जाऊ एंड वाटर स्कार्स ब्लॉक्स जो माने रहिले तांको भी प्रायोरिटाइज करा जाऊ जीआईएस मैपिंग यूज करा जाऊ फॉर आइडेंटिफाइंग द लेफ्ट आउट हैबिटेशंस पंचायत लेवल रे जो वर्कर्स माने रहिले तांको ट्रेन करा जाऊ तांकर कैपेसिटी बिल्डिंग को इंप्रूव करा जाऊ तांकर स्किल डेवलप करा जाऊ फॉर लोकल मेंटेनेंस ओके एबे एमसीक्यू टा अटेम्प्ट करो मिशन पोवार लॉन्च्ड बाय ओडिशा फोकसेस ऑन व्हिच थ्री सेक्टर्स को तीनटा सेक्टर मिशन पोवार अंडर रे आसुची पावर हेल्थ एजुकेशन वाटर रोड्स हाउसिंग पावर ड्रिंकिंग वाटर रोड्स एग्रीकल्चर एनर्जी करकेश सुलता शिवधात्री करेक्ट आंसर देचंती करेक्ट आंसर अब सी पावर ड्रिंकिंग वाटर रोड्स क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स बरुणेई आइलैंड एंड श्राइन ओडिशा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट टॉपिक न्यूज रे एथिपई कि अछि काहेकि ना जो हिस्टोरिक मां बरुणेई श्राइन अछि लोकेटेड ऑन बरुणेई आइलैंड इनसाइड भितरकनिका नेशनल पार्क सीए एबे वल्नरेबल हे जाइछि बा ताकू एबे सीवियर थ्रेट अंडर रे से पळे आछि फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स काइना आइलैंड रे अछि सो राइजिंग सी लेवल्स गोटे डायरेक्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस पकेबो श्रिंकिंग लैंड मास एंड कोस्टल एरोजन लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज बरुणेई आइलैंड एटा कहार पार्ट भितरकनिका वेटलैंड इकोसिस्टम रो गोटे पार्ट जे कि गोटे रामसार साइट 2002 रु एंड नेशनल पार्क 1998 रे रामसार साइट से केबे हैला 2002 रे डेजिग्नेट करा गला एंड नेशनल पार्क हिसाब रे केबे से डेजिग्नेट करा गला 1998 रे इन केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ए श्राइन टा वंस सेटा रिमोट थिला किंतु स्टेबल थिला किंतु एबे इनएक्सेसिबल हे जाउची एज द आइलैंड्स लैंडमास रैपिडली श्रिंक्स लैंडमास कोन पई कि कमुची कहीं ना सी वाटर लेवल्स बढ़ुची वाटर लेवल्स इनुंडेट करिकी हेकी आसुची त लैंडमास श्रिंक करूची लोकल्स एबे से माने डरुचंती कि बरुणी आइलैंड मे फेस द सेम फेट एज अगारा नाशी a nearby coastal area submerged in 2023 okay location and ecological setting बरुणेई आइलैंड टा कोठी अछि इट लाइज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हंसुआ ट्रिब्यूटरी ब्राह्मणी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल एंड तांकर जो कॉन्फ्लुएंस टा रहला से बरुणेई एस्चुआरी फॉर्म करूची फॉर्म्स द बरुणेई एस्चुआरी सराउंडेड बाय नॉर्थ रे कोठरे से सराउंड हे गहिरमठा नॉर्थ रे तार गहिरमठा अछि ऑलिव रिडली नेस्टिंग जोटी हुए दंगमाल अछि जोटा की फेमस फॉर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर साउथ रे तार कोन अछि बत्तीघर लाइट हाउस हुकीतोला आइलैंड आउ एठी डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा जानती एक्सेसिबल ओनली वाया द वाटर रूट एटी जो नॉर्थ साउथ रे कोन अछि कहारो कॉन्फ्लुएंस रे बरुणेई एस्चुआरी केमिदी फॉर्म होची ए जो डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट काइना आ ऊपर ना ज्योग्राफी ओडिशा ज्योग्राफी एमसीक्यू फॉर्म हे परिबो ए न्यूज़ टा बहुत इंपोर्टेंट काइना गोटे प्लेस इट इज अंडर थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट टॉपिक हे गला एंड जेहेतु गोटे प्लेस डिस्कस हेची प्लेसेस इन न्यूज़ रे से ओडिसा रो जो प्लेस इन न्यूज़ रे से पळे आसीबो ज्योग्राफी अंडर रे पळे आसला तार लोकेशन कोठी कोन अछि पचार दबो सो एटा बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रही कि जो माँ बरुणेश्वरी नोन एज गड़चंडी द गार्डियन डेटी ऑफ द रीजन एटा बिलीव करा जाए कि सी जो कनिका नेवल फ्लीट हेतिला सी सेटा प्रोटेक्ट करथिले व्हिच डिफीटेड द नवाब्स ऑफ कटक इन द 18th सेंचुरी ए जो एरियाटा वंस कनिका कोस्ट रो गोटे पार्ट थिला बे ऑफ बंगाल नोन लोकली एज द कनिका सी धामरा रिवर कनिका रिवर थिला एंड नॉर्दर्न सैंडबार जो थिला सेटा कनिका आइलैंड थिला मेंशन हेछि इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ राधाचरण पंडा जगबंधु सिंह तत्रेव एंड सरस्वती दामोदर इन भंजकनिका ए जो रीजन टा रहिला सेटा कलाद्वीप एंशिएंट कलाद्वीप संगे लिंक अछि अ कोस्टल टेरिटरी विथ हार्बर एंड आर्मरी गार्डेड बाय मां बरुणेई करंट थ्रेट कौन अच्छी लैंडमास श्रिंक करुच्ची बरुणेई आइलैंड से आगु 200 स्क्वायर किलोमीटर 1870 रे थिला एबे ओनली 50 स्क्वायर किलोमीटर हेकी रही जाइछि नियरली 150 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी लॉस्ट ओवर 150 इयर्स सॉरी कोस्टल एरोजन मैंग्रोव रे डिप्लीशन होची जोटा कि एरोजन को फर्दर एक्सेलरेट करुची tidal surges increase ହେଇଯାଇଛି cyclonic activities increase ହେଇଯାଇଛି that are damaging the coastline sea level rise ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି climate change induced sea level rise posing risk of submergence loss of access water level rise makes the shrine harder to reach for the locals and pilgrims climate change ର impact କଣ ହଉଛି on coastal ecosystem what is the impact of climate change on coastal ecosystem first the rising sea level ସେଥିରେ sea level ଯେତେବେଳେ rise କରିବ island ଆଉ wetland ସେମାନେ submerge କରିଯିବେ salinity intrusion salinity ଯେତେବେଳେ intrusion ବଢିଯିବ ତାହେଲେ mangroves loss of mangroves ହବ cyclone ଆଉ storm surges ଯେତେବେଳେ ବଢିବ erosion intensify ହବ biodiversity ମାନଙ୍କୁ risk ଅଛି ଯେମିତି turtles crocodiles birds at risk near ଭିତରକନିକା cultural heritage loss temples shrines and coastal establishments they are at loss now what are the advantages of the proposed interventions first of all restoring mangroves protect the shoreline okay tourism infrastructure जो रहिला ferry visitor center rest house they can be used to raise the awareness battery operated boat जोड़ा रहिला reduce the pollution in the national park increased visibility to shrines cultural and educational heritage ecotourism local employment generation what are the disadvantages or the concerns risk of over tourism जोटा कि वाइल्ड लाइफ को फर्दर डिस्टर्ब करिवो ऑलिव रिडली नेस्टिंग को से डिस्टर्ब करि पारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड अ प्रोटेक्टेड एरिया में नीड स्ट्रिक्ट क्लियरेंसेस प्रोटेक्टेड एरिया भितर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडक्ट करिया पई कंस्ट्रक्ट करिया पई स्ट्रिक्ट क्लियरेंस थ्रू रु बा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट थ्रू रु जिबा को पड़िबो restoration of mangroves is slow and climate sensitive mangroves मानकर restoration drive जदि conduct हुए ताले सेटा it is usually slow and climate sensitive rising sea levels may outpace protection measures cultural heritage may still face long term submergence risk now what are the way forward or the solution that should be adopted and or what are the way ahead for this problem mangrove restoration massive mangrove restoration activities conduct how to buffer the erosion use gis mapping to track the coastline retreat controlled ecotourism model following ramsar and wildlife protection act norms shrine access should be improved using sustainable boats not motorized vehicles document and preserve shrine history through digital archives vulnerability assessment conduct ho for long term coastal protection solve this mcq which river meets the bay of bengal to form the borunei estuary subarnarekha mahanadi baitarani hansua tributary of the brahmani
समस्त करेक्ट आंसर दौरान करेक्ट आंसर विल बी हंसुआ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्राह्मणी. लास्ट करंट अफेयर्स. पेंटेड स्टॉर्क्स एट गहिरमठा. जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट टॉपिक प्रीलिम्स में इंपोर्टेंट स्पेसिफिकली एटा. पेंटेड स्टॉर्क आर साइंटिफिक नेम होजी माइस्टेरिया ल्यूकोसेफालिया. फीचर्स पिंक प्लुमेज, लॉन्ग येलो बीक, ब्लैक व्हाइट टेल. एंड एमाने को हैबिटेट प्रिफर करंदी शैलो वाटर एमाने प्रिफर करंदी फॉर फोरेजिंग. आंकर डाइट कोन फिश स्नेल्स क्रैब्स एक्वाटिक इंसेक्ट्स. हैबिटेट जेमति कि वेटलैंड एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स एमाने प्रिफर करंदी सेठी रुहंती. न्यूज रे माने अछंदी जेहेतु विंटर एबे आसुची लार्ज फ्लॉक्स ऑफ पेंटेड स्टॉर्क से माने गहिरमठा माराइन सेंचुरी रे ऑलरेडी पहुंची गलनी केंद्रापड़ा रे, टर्निंग इट इनटू अ मेजर विंटरिंग एंड ब्रीडिंग हैबिटेट. पोस्ट मंथा साइक्लोन परे साइटिंग्स रे इंक्रीज देखा जाइए नियर तंडा फॉरेस्ट, हेंताଳ मैंग्रोव्स एंड एडजॉइनिंग क्रिक्स. बैकग्राउंड गहिरमठा माराइन सेंचुरी आमर जो रहिला एटा होची इंडिया रो फर्स्ट माराइन सेंचुरी. मने रखिबे कि इंडिया रो फर्स्ट माराइन सेंचुरी कोन गहिरमठा माराइन सेंचुरी जोटा कि फेमस फॉर ऑलिव रिडली टर्टल नेस्टिंग जाको आरिबडा भी कहिताउ. एटा मैंग्रोव फॉरेस्ट रे रिच एस्चुरीज क्रिक्स एंड आइडियल फॉर द वाटर बर्ड्स. पेंटेड स्टॉर्क एटा गोटे माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज जे कि विंटर रे आसंती फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग. मैंग्रोव्स तांको कोन पई अट्रैक्ट करूची काइना मैंग्रोव्स गोटे सेफ नेस्टिंग कवर प्रोवाइड करूची फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी. हाई बायोडाइवर्सिटी रहिची जोटा कि अबंडेंट फूड तांका पई की प्रोवाइड करूची. एंड नेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स रूट्स मैंग्रोव रो जो रूट्स रहिला दे एक्ट एज द नेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स. गहिरमठा माराइन सेंचुरी कोठी लोकेटेड इन केंद्रापड़ा ओडिशा. एटा भितरकनिका मैंग्रोव्स इकोसिस्टम रो गोटे पार्ट जोटा कि बर्ड्स टर्टल्स क्रोकोडाइल्स एमाना पई इंपोर्टेंट. एडवांटेज कोन ए जो फेनोमेनन रो इकोलॉजिकल इंडिकेटर ये गोटे प्रोवाइड करे कहीं स्टॉर्क्स मानकर प्रेजेंस एटा शो करे कि मैंग्रोव्स एंड एस्चुरिन इकोसिस्टम हेल्दी अछि. बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल फूड चेन को बूस्ट दिए. enhances potential for ecotourism in Odisha, raise the awareness for wetland and mangrove conservation. Disadvantages pa concern kono poaching threats rohuchi. Local hunters बेले बेले से माने कौन करूचंदी पॉइजन ट्रैप्स यूज करूचंदी सो देयर आर पोचिंग थ्रेट्स. साइक्लोन्स जेमती मंथा हैला से गुडी का बर्ड हैबिटेट को डिस्टर्ब करि पारे. मैंग्रोव डिग्रेडेशन होची ड्यू टू एरोजन एंड पोल्यूशन. ह्यूमन इंट्रूजन ड्यूरिंग नेस्टिंग सीजन कैन कॉज स्ट्रेस टू बर्ड्स. वे फॉरवर्ड कौन एंटी पोचिंग सर्वेलेंस को स्ट्रेंथन करा जाऊ जोड़ा कि ऑलरेडी इनिशिएटेड करा जाइछि बाय फॉरेस्ट स्टाफ. मैंग्रोव रेस्टोरेशन को एक्सपैंड करा जाऊ इन एरोजन प्रोन पैचेस. एस्टैब्लिश रेगुलेटेड इको टूरिज्म जोन्स विथ स्ट्रिक्ट विजिटर रूल्स. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनहांस करा जाऊ इन बर्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स. लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ माइग्रेटरी बर्ड पैटर्न्स फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट. लास्ट एमसीक्यू टा अटेंड करो एंड जो मैंने एमसीक्यू आज क्लास करी नांती कि जो माने रिकॉर्डेड देखिबे कि जो माने अटेम्प्ट करी नांती जो माने अटेम्प्ट करी भी चंती हाउ थरे बहुत भल से आंसर और एक्सप्लेनेशन मु लास्ट नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबी. सो क्वेश्चन पचारची पेंटेड स्टॉर्क इज कॉमनली फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ हैबिटेट. हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स, मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, अल्पाइन फॉरेस्ट्स, डेजर्ट इकोसिस्टम्स.
Yes, the correct answer is B. They prefer mangrove and wetlands. Okay, so that is it for today. Thank you for watching. जहाँ भी डिस्कस है तार पीडीएफ टा डाउनलोड करी नेबे कमेंट सेक्शन रे लिंक प्रोवाइड कर दिया जिवो लिंक को क्लिक करिकी डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द कमेंट सेक्शन जो माने लाइव अटेंड करना दे से माने को रिकॉर्डेड भी देखि परिबे एंड ट्राई टू आंसर ऑल द एमसीक्यूज इन द कमेंट सेक्शन डिटेल्ड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू